So in this lecture we are going to discuss about the reflexive, symmetric and transitive relationship, as well as we are also going to discuss about the equivalence relation. We'll also take one example to understand it well. So let us start with the reflexive relationship. So let us consider that we have a set A and R is the relation which is there in set A, and reflexive relation can be called as if we have a relation, if we have a ordered pair which belongs to R for every A belongs to R. So if we try to understand this example, then let us say एक example ले रहे हैं हम. Okay, let us say A. So what is A? Let us consider that it is a set of straight lines. Okay, what is A? It is a set of straight lines. Okay, and if I wish if I wish to write down the लिस्ट, ओके मैं इसका लिस्ट बनाता हूँ. मान लो कि यहाँ पे ये एक प्लेन है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, ऐसा कर देते हैं. ठीक है, सो एक प्लेन मान लो. ओके, स्ट्रेट लाइन बनानी है. सो ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, फोर्थ हो गई, राइट. ओके, सो इफ आई विल से दैट दिस इज L1, this is L2, this is L3, this is L4, right? So if I wish, then set of A can be represented as L1, L2, L3, L4, and there are so many possibilities. N number of straight lines are there. If I wish to write down the R, then the possible R can be given as एक ordered pair. ऐसा भी हो सकता है कि L1 का खुद का ही ordered pair. Okay, so what I can write is L1, L1. तो ये ordered pair हो गई. Similarly, line number 2 के लिए भी हम ऐसा लिख सकते हैं. So that is L2, L2, right? And same way, so many combinations are possible, and the last possible combination is Ln, Ln. So as you can see over here, it satisfies this condition. Both the elements are same, okay, and they belongs to the relation, right? And that is applicable for all A, right? सभी A के लिए ये possible है. So this was just an example. If we talk about the symmetric relationship, then let us consider that A1 and A2 belongs to R. Then it's, if I will swap that number, A1 and A2 pair है, वो order pair को मैं swap कर देता हूँ. That is A2 A1. If this belongs to R, then we can say that it is a symmetric relation. तो इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, राइट? सो इफ वी टेक दैट कि यहाँ पे L1 और L2 है, बट इफ आई टेक R as a parallel lines, okay, then over here what is going to happen? अगर मैं ऐसा बोलूं कि L1 is parallel to L2, ध्यान से देखना आप, L1 is parallel to L2, right? तो I can say that कि इस सेट में L1 is parallel to L2, so I can include it. अगर मैं इसका रिवर्स सोचूं, क्या L2 है वो L1 की पैरेलल है? Obviously, right? So I will include that line also, so that will be L2, L1. तो ये दोनों पेयर है वो, as you can see we have swapped this ordered pair and it is there, so I can say that it is a symmetric relation. Same way you can prove for other lines also. There are so many possibilities, right? If we talk about the transitive relation, okay, then in this case let us say A1 and A2 belongs to R, A2 and A3 belongs to R, then it implies that A1 and A3 also belongs to R. एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो कि A, B और C ये तीन बॉयज हैं, ओके, और A and B are real brothers, okay, and B and C are also real brothers, then you will immediately say that A and C are also real brothers. Obvious बात है, right? So that is example of a transitive relation. तो लाइन के हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूं, then in this case let us say again R is the parallel lines, ठीक है.
अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि L1 and L2 are parallel lines, L1 and L2 are parallel lines with each other, if I'll say that L2 and L3 are also parallel, L2 and L3 are also parallel to each other, तो इसका obvious meaning ये होगा कि L1 and L3 are also parallel lines, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टिव रिलेशनशिप। अभी बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ओके, तो इक्विवेलेंस होता है ये तीन कंडीशन, ये तीनों अगर सेटिस्फाई होती है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, देन वी कैन से दैट यस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तीनों कंडीशन, ये तीनों चीजें आनी चाहिए तो हम बोलेंगे कि यस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, से T, let T is the set, okay, which represents all triangles in a plane, right? तो आप ये बोर्ड को एक प्लेन मान लो, ओके, और उसमें ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स सोच लो, ठीक है, बहुत सारे n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। नाउ if I consider a relation R, okay, in which there is a ordered pair, कोई भी दो ट्रायंगल हमने चूज कर लिए हैं T1 and T2, okay, what is the relation between T1 and T2? So it is T1 is a congruent of T2, T1 is a congruent of T2। इसका मतलब क्या? congruent मतलब कि I can superimpose the triangle, so you pick up the two triangles, okay, रोटेट इट या कुछ भी करो, लेकिन एक ट्रायंगल के ऊपर अगर दूसरा ट्रायंगल है वो सुपर इंपोज हो जाता है, सो वो हो गई उसकी कॉन्ग्रुएंसी, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इसका मतलब है मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि R है वो रिफ्लेक्सिव है, R है वो सिमेट्रिक है और R है वो ट्रांजिस्टिव है, राइट। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? इफ आई कंसीडर अ ट्रायंगल T1, ओके, देन दैट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू इटसेल्फ, राइट। यहां पे देखो आप AA, सो इफ आई कंसीडर अ ट्रायंगल T1, देन इट इज अ कॉन्ग्रुएंस टू इटसेल्फ, राइट। तो इसका मतलब हुआ T1, T1 belongs to R, and I can say that the R is reflexive, ठीक है ना। दूसरा वाला लेते हैं कि if it is symmetric or not, right? So A1 A2 belongs to R, तो उसका जो स्वेप करेंगे A2 A1 belongs to R वो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि हम दो ट्रायंगल पिक कर रहे हैं T1 and T2, okay, which is belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 and T2 के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, T1 is congruent to T2, तो इसका रिवर्स भी सही होगा, T2 is also congruent to T1, तो I can write it like this, T2, T1 is also congruent, ठीक है ना, okay, that means I can say that R is symmetric, ठीक है ना, R is symmetric। And the third one, okay, so let us consider three triangles, okay, and I am saying that T1 and T2 are congruent, मतलब कि वो relation में that belongs to the relationship। I will take another triangle that is T3, okay, T2 and T3 are also in congruence, so that is also included in R। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 congruence है, T2 T3 congruence है, तो T1 and T3 are also by default congruence, right? So I can imply that T1, T3 also belongs to R, right? Hence I can say that these R is also transitive। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, so I can say that R is an equivalence relation, ठीक है। तो आप नीचे एक लाइन लिख देना कि hence R is an equivalence relation, ठीक है। So similarly you try for some other numericals, it is very easy। That's all for today, thank you।